Hi everyone, welcome back to this channel once again where I'm learning English. So I thought I should also help all those people who really want to learn spoken English. तो मैं इस वीडियो में ये बताने जा रही हूँ कि मैं किस टाइप की वीडियो अपलोड करूँगी और हमें इंग्लिश सीखने के लिए कौन सी बेसिक चीज़ें समझना ज़रूरी है और रोज़ उसके लिए क्या एक्शन लेना चाहिए ताकि हम इंग्लिश में फ्लुएंट हो सकें. ओके, सो द बेसिक थिंग इज ओनली स्पीकिंग. देखो, आप जितना बोलोगे उतना ही आप समझोगे, ठीक है, आई मीन सीखोगे. So the thing is, we know that for learning English we require reading, writing, speaking as well as listening. ये 4 चीज़ होती है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, जिसमें स्पीकिंग बहुत ही मस्ट है. अगर आप बोलोगे ही नहीं देन हाउ वुड यू लर्न टू स्पीक इंग्लिश. ओके, हम सब जानते हैं जब हमने बोलना शुरू किया था बचपन में, जब हम बच्चे थे तो हमने कोई ग्रामर नहीं पढ़ी, किसी ने हमें बताया नहीं क ख ग घ क्या होता है या फिर कैसे कौन-सा वर्ड हमें फॉर्म करना है या फिर हम किस टाइप की सेंटेंस फॉर्म करेंगे. ये सारा ऑटोमेटिक हुआ तब जब हमने सुनना शुरू किया अपने इन्वायरमेंट से. सो व्हेन वी स्टार्टेड लर्निंग एंड लिसनिंग टू आवर इन्वायरमेंट वी ऑटोमेटिकली स्टार्टेड स्पीकिंग वर्ड. उस टाइम भी हम नहीं बोल पाते थे, टूटी-फूटी बोलते थे, लोग हँसते थे क्योंकि हम बच्चे थे तो लोगों को अच्छा लगता था. बट नाउ द टाइम हैज़ चेंज्ड, वी हैव ग्रोन अप और हम इतने बड़े हो गए हैं कि अगर हम कुछ गलत बोले तो लोग हँसते हैं, मज़ाक उड़ाते हैं. एंड दिस इज़ द पॉइंट वेयर वी रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ, वेयर वी लिमिट आवरसेल्फ एंड वी डू नॉट open up. We get shy, we get nervous in front of people and don't want to speak English because we think once we get perfection in English then only we can start. But ऐसा दिन कभी नहीं आएगा. Believe me, जब आप सोचोगे कि मैं आज परफेक्ट हो जाऊँ, कल परफेक्ट हो जाऊँगी, मैं 100 वोकेबलरी सीख लूँगी रोज़ या फिर 10 सीख लूँगी एंड देन आई विल स्टार्ट फ्रेमिंग सेंटेंसेस एंड देन आई वुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश. तो बिलीव मी, ये दिन कभी नहीं आएगा क्योंकि मेरा भी आज तक नहीं आया है. इट्स बीन लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स, मोर देन 20 ईयर्स की मैं तब से प्लान कर रही हूँ. हाँ, मैं इंग्लिश सीखूँगी, ऐसे कर लूँगी तो सीखूँगी, वैसे कर लूँगी तो सीखूँगी. बट नन ऑफ दीज प्लान हैज़ एवर फॉल इनटू प्लेस. मतलब कि ये कभी भी काम नहीं आया है और ये किसी को भी नहीं आता है. सो व्हाट ऑल माय सजेशन इज टू यू पीपल इज स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. यू नो, द सेकेंड क्वेश्चन कम्स कि हम कैसे प्रैक्टिस करें. देखो, हम सब जानते हैं कि प्रैक्टिस करना मतलब है कि बोलना. अब आप कुछ भी बोल सकते हो. आप जैसे मैं अकेले हूँ अभी तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ. नो वन इज हियर टू मी, नो वन इज to mock at me, no one is to make fun of me, no one is listening me. तो मैं कुछ पर भी बोल सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, एट लीस्ट आई कैन स्टार्ट स्पीकिंग. मैं ये नहीं बोलने जा रही हूँ कि आप डेली रूटीन करो, बट सिंपल थिंग, स्टार्ट विथ सिंपल. आई मीन टू से कि लोग रूटीन के बारे में क्यों बोलना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी डेली एक्टिविटी है एंड इस एक्टिविटी में हम बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, हम बहुत ही स्मार्ट हो रखे हैं क्योंकि एवरी डे वी आर डूइंग दिस सेम स्टफ, सेम एक्शन लाइक ब्रशिंग टीथ, टेकिंग बाथ एंड ईटिंग healthy food, doing regular exercise, going to school, college, office, whatever, or maybe at home then doing different stuff, household chores. तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे फिंगर टिप पे होती है. तो वी कैन ईजिली रिकॉल, रिकॉग्नाइज एंड देन स्पीक, ट्रांसलेट एंड स्पीक. अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि हम किस टाइप की टॉपिक ले. तो जैसा मैंने बताया कि रूटीन लोग इसीलिए डेली रूटीन पे हम इसीलिए ट्राई करते हैं बोलना क्योंकि ये हमें ईजी वे में पता होता है, हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता एंड देन वी कैन ईजिली स्पीक ऑन दिस टॉपिक. अगर आप इस पर नहीं बोलना चाहते हो तो एट लीस्ट यू स्टार्ट विथ योर पास्ट थिंग. पास्ट में ये नहीं कहूँगी कि 10 साल पुराना हो गया देन यू हैव टू मेक अ स्टोरी, और दैट कैन ऑल्सो बी अ गुड आइडिया. ओके, बट हमें ये सब नहीं करना है. और अगर ये हमें बहुत हेक्टिक लगता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है, देन वी कैन डू वन थिंग. whatever we have done from early morning to late night, we can just narrate all the story in past. Or for example, if you are going to do something tomorrow or after
evening or after lunch, what all your plans are, you can easily narrate them in a story or practice them in a form of framing sentences. For example, let me give you very basic example of my today's activity, whatever I did since morning till now. So today I woke up around 5:45, something like that. Um, well, I had set my alarm around of 4 a.m., which I snooze out, which was my bad habit. I know that I'm working upon it, but let's see when I'm going to get over of this habit or get rid of this habit. Okay, let's come to the main topic. So after waking up, what I did, I brushed my teeth, I freshen up, and then I went straight forward to get my yoga mat. I spread my yoga mat, started doing yoga, did some asanas and stretches my body. Since I was too much tired today, my body was not allowing me to perform asana. So what I did, I just did basic Sukshma Vyam, and right after that, I take out my coconut water from the fridge. I opened my fridge door and then took out the tender coconut water. I had to peel it off and then turn the water. I mean, not turn, pour the water into the glass. Then I took it into the glass. Then I had to wash my glass, what we call that, sipper. Okay, after washing it, I used it for drinking, and I enjoyed my chilled coconut water after workout. Not heavy workout, but mild workout, and I was feeling quite refreshed. After that, I went to washroom, took shower, and then came back, did little puja, enjoyed my healthy breakfast. In breakfast, I today chopped little bit apple along with some so overnight soaked almond. Okay, and then with little bit two tablespoon of curd, because I am nowadays maintaining my health, especially my gut health. I'm taking care of that because of I have some health issues. And in normal also, I suggest people that you should also start doing light and healthy breakfast full of protein. So yes, I did all this thing. After that, what I did, yes, I had to study, but I skipped because, as I told you, I was feeling quite tired. And after eating my breakfast, my legs started paining severely, and I was like in severe pain. I didn't know why it started. Then what happened, I thought of lying down for some time and then go back to study, but it didn't happen. Once I went to bed, I didn't know when it turned 3 o'clock. I mean, it's quite ridiculous that just after having breakfast, and I had taken my breakfast around 10. Okay, and when I asked my mom after getting up, I asked my mom, why didn't you wake me up? Then she said, because you said you were not feeling well, you were tired, and I saw you that you were massaging your leg with mustard oil, so I can experience and observe and feel that you were literally in severe pain. So it's better to take some rest so that you will recover soon. And yes, after waking up, I was not feeling very good, but little bit better. And then I had to go for more evening walk, because it is my daily habit every day. I am now I have developed this habit. So I went to ground for completing 8,000 step, and I luckily and completed it. Then I took one picture of myself in the ground for accountability purpose, and I came back around 7 o'clock. Then I enjoyed my dinner. I took light dinner because I know at night we should eat little bit lesser than our appetite. And yes, I drank a lot of water to make myself hydrated, to keep myself hydrated. And then I took a walk for 10 to 15 minutes to make my food digest easily.
and then I came here. I did some studies. Today I read about Bihar special because I am preparing for competitive exam and all. And then I thought it's time to sleep after completing one lecture, and it was very much informative because I knew multiple things about Bihar which I did not knew before that. Though I am from Bihar, I must have known all this thing. Well, I was quite happy after completing that lecture, and I thanked the sir also because it was online class, so I could not write the live message because it had happened few days ago. Even though I showed my gratitude to sir, because of him I came to know much about my Bihar, from where I belong to. Yes, after that I closed my all the notebooks, and then I thought to practice spoken English because it has been um, my long time, I would say, not dream, but my plan to start practicing English and upload the same video. So this is what I all did today. Right now I am speaking, practicing, and recording this video. After some time I'm going to just upload it for all of you guys as well. So that's all for my today's practice. See how I fluently spoke about a topic which was not topic, just a kind of activity that I did. And why I was fluent? I was fluent because I knew all the things, I had done all the things, and that is why I was able to speak. ठीक है, तो जो चीज़ हमें नहीं पता होती है उसके बारे में हम बोल भी नहीं पाते हैं, और जो चीज़ हमें पता होती है उसके बारे में हम फ्लुएंटली बोल पाते हैं, चाहे हम गलत ही बोले. एंड दिस इज द बेसिक technique of learning English or any language. Until you speak, until you start speaking, you will not get to know how to pronounce, how to develop habit, how to make your tongue टंग मसल टू एक्ट लाइक दैट. आई मीन अपने टंग को भी उस हिसाब से आपको ट्रेन करना होता है दूसरे लैंग्वेज को बोलने के लिए. मतलब अगर हम अभी स्पेनिश बोलें या चाइनीज बोले तो हम नहीं बोल पाएंगे, बिकॉज वी आर नॉट हैबिचुएटेड, वी डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, वी डोंट नो हाउ टू रीड. ओके, तो इंग्लिश भी वैसे ही है. जो लोग अभी तक या कभी भी इंग्लिश बोला नहीं है, या फिर जो बोल भी रहे हैं बट दे थिंक दैट आई एम नॉट एबल टू बी बी फ्लुएंट, so this is the only reason. And yes, that's all for today's video. I think it would be helpful for all of you, and if you really think this is helpful, I will tell you, go and start practicing from now onwards. And last thing is, जो मैं बोलना चाहूँगी, देखो आप कितनी भी वीडियो देख लो, चाहे बहुत हाई फाई स्पीकर की, जो जिसकी इंग्लिश बहुत ही हाई फाई है, हाई लेवल ऑफ इंग्लिश है, उसकी भी अगर देख लोगे तो भी आप सीख नहीं पाओगे जब तक आप खुद से बोलना नहीं सीखोगे. टूटी फूटी बोलो लेकिन बोलो. देखो मैंने भी बोला यहाँ पे, इट वॉज नॉट वेरी फैंसी इंग्लिश, इट वॉज नॉट वेरी American kind of English, but at least I'm able to convey my things. I am able to narrate story, create a kind of environment that yes, I can translate my thought into English and convey my message to others. Okay, and हमें यही चाहिए. This is called communication skill. And yes, by time, मतलब आप धीरे धीरे जब डेवलप करोगे अपनी स्पीकिंग स्किल तो डेफिनेटली ये और अच्छी होती जाएगी. एंड यू ऑल्सो नो दैट. ओके, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर. आई वुड से गो एंड प्रैक्टिस. बाय, टेक केयर.